Hello students, welcome to IDVN Memorial classes. Now let us solve question number 1 of exercise 12.2. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. तो कैसे करेंगे, लेट अस सी. नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, सिंस वी नो दैट what we know that distance between two points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 is PQ equal to, क्या होता है, by using distance formula, distance between 2 points P and Q is PQ equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square and its square root. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinate are given in 3-dimensional system. ठीक है, सो नाउ हियर डिस्टेंस बिटवीन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. हियर 4 पेयर्स आर गिवन. सो पहला पेयर क्या है, लेट A 2 3 5 and B 4 3 1 are the given points. Then distance between A and B will be distance AB and it will be how much? So if A and B are given points, then distance between them is AB equal to, क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, इन सारे सम का स्क्वायर रूट. ठीक है, सो लेट अस राइट हियर, दिस इज 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 5 whole square. Now this will be equal to 2 square plus 0 square plus minus 4 whole square. ठीक है, now this 2 square is 4, 0 square is 0 and minus 4 whole square is plus 16. So this is 4 plus 0 plus 16 which is equal to square root of 20. Now this 20 can be factorized as 4 into 5. ठीक है, so this may be written as 4 into 5. Now square root of 4 is 2, so this will be 2 into root 5. ठीक है, so this is the distance between A and B by simply using the given formula, that is distance formula for 2 points. Now second question क्या है, लेट, इसके लिए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, लेट P minus 3 7 2 and Q 2 4 minus 1 are given points. Then PQ equal to, here PQ कितना हो जाएगा, दिस 2 माइनस माइनस 3 यानी 2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3 होल स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 3 होल स्क्वायर. सो लेट अस राइट, दिस इज 2 माइनस माइनस 3 यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 whole square. Now this will be equal to
5 square plus minus 3 whole square plus again minus 3 whole square. So now this will be 25 plus 9 plus 9, that is square root of 43. Now this 43 is not a perfect square and also it's a prime number, so its square root will be square root of 43 only. ठीक है. Now the third part is, that is third question is, let here m minus 1 3 minus 4 and n 1 minus 3 4 are the given points. Then distance between them is mn. Now this distance mn will be equal to 1 minus minus 1, यानी 1 plus 1, this is 1 plus 1 whole square plus minus 3 whole square plus 4 minus minus 4, यानी plus 4 हो जाएगा whole square. So this will be 1 plus 1 2 square minus 3 minus 6 whole square and 4 plus 4 8 whole square. So this will be 2 square plus minus 6 whole square plus 8 square. Now its value will be 4 plus 36. This is square root of 4 plus 36 plus 8 is the 64. Now complete sum will be 36 plus 4 40 and 60 104. ठीक है. So this is 104. ठीक है. Now एक किसका स्क्वायर रूट होगा? 104 किसकी टेबल में आएगा? That is 26 into 4 104 होता है. So this is 4 into 26. Now its square root will be, or mn equal to 4 into 26 square root है. This will be 2 into under root 26. ठीक है. This value will be 2 into under root 26. Now last, that is fourth one. क्या है? Here let x, first point is x 2 minus 1 and 3 and second point is y minus 2 1 3 are given points. Then distance xy is, क्या हो जाएगा here? xy equal to square root of minus 2 whole square. ये minus 2 है और ये minus 2 दोनों मिलके minus 2 whole square. 1 minus minus 1, that is 1 plus 1 whole square. So here plus 1 plus 1 whole square plus 3 minus 3 whole square. यानी ये minus 4 whole square plus 2 whole square plus 0 square. So this will be equal to square root of minus 4 whole square plus 2 square plus 0 square. That is again 16 plus 4 plus 0. That is square root of 20. Now 20 can be further factorized as 4 into 5. So this is square root of 4 into 5 equal to 2 into under root 5. ठीक है. So इस तरह से
हमने चारों पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन के है वेरी सिंपल टू सॉल्व वी हैव डन इट। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।